Hello student, this question is basically from GATE 2016 examination, yes. And this question for 2 marks, yes. Okay, the question is basically from the chapter of diode, and the question is like this: consider avalanche breakdown in a silicon P plus N junction. The N region is uniformly doped with a donor density Nd. Assume that the breakdown occurs when the magnitude of the electric field at any point in the device becomes equal to the critical field. Assume critical field to be independent of Nd. If built-in voltage of P plus N junction is much smaller than the breakdown voltage, the relationship between breakdown voltage and the donor density. So we have a four option, we need to choose the correct one. Now we see the solution of this question. Okay, देखिए ध्यान से ये जो क्वेश्चन आपका है ये कहीं ना कहीं P प्लस N डायोड दिया गया है। साथ के साथ इसमें आपसे कहा गया है कि जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो जा रहा है वो आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, ई क्रिटिकल है। और उस टाइम जो आपका वोल्टेज हो कितना आपका है, वी बी आर है। आपसे वी बी आर और एन डी के बीच में रिलेशन पूछा गया है। पी प्लस एन डायोड है, क्या मतलब हुआ इस पी प्लस एन डायोड का? आई से दिस की कहीं ना कहीं पी प्लस एन मीन्स द डोपिंग ऑफ पी साइड इज मच मच ग्रेटर देन योर डोपिंग ऑफ एन साइड। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डोपिंग है किसकी, पी साइड की, वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम किससे कंपेयर करें, डोपिंग ऑफ एन साइड। दिस इज वी हैव। तो यहाँ पे Na, क्योंकि P plus means highly doped, this N means normally doped, I say this. So Na is much much greater than your Nd, and I say this 1 upon Na, I say this less than 1 upon Nd. So this is also holds. तो Na की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है Nd से, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 upon Na काफ़ी कम होगा 1 upon Nd से। नाउ सी दिस, अगर आपसे इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट, दिस वी ऑब्जर्व दैट ई क्रिटिकल। सो उस समय जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में बोला कितना वी बी आर है। सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई जस्ट राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन, सो आई जस्ट राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन। सो अगर देखिए ध्यान से हम यहाँ पे लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन क्या होगा, सो इट शुड बी आई से दिस ई जंक्शन और आई से दिस ई क्रिटिकल। ओके, इस आई से दिस ई क्रिटिकल और आई से दिस ई जंक्शन, इफ आई जस्ट राइट, which is I say, minus Q Na WP upon epsilon. Now I just say this is the electric field at the junction minus Q Na WP upon epsilon. Now I just replace your WP with the help of W here. देखिए ध्यान से, we know the W is equal to Wn plus WP. तो यहाँ पे जो W की वैल्यू है Wn plus WP के इक्वल होगी। Now I say this, we know the relation Na upon Nd is equal to, I say, the Wn upon Wp, which is also correct, no problem. If I add 1 both sides, so what happen? 1 plus Na upon Nd is equal to Wn upon Wp plus 1. So Wn upon Wp plus 1, okay. So if I just take this, I say here Nd plus Na divided by Na Nd is equal to Wn plus Wp divided by Wp. So from where definitely we can calculate the Wp. So what about the Wp? So Wp is equal to, I say, which is Nd plus sorry, this is, if I just try to calculate Wp, okay, this is not here Na, sorry for this. So यहाँ से देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, ये Nd plus Na upon Nd, this is not Na Nd, so this is Nd plus Na upon Nd, which is Wn plus Wp upon Wp. So from where I say this Wp is equal to Ndw upon Na plus Nd. So this is, we have a Wp. So this is, I sometimes use the result direct, Ndw upon Na plus Nd. तो देखिए ध्यान से मेरे पास कहीं ना कहीं ई क्रिटिकल के बारे में कह रहा है। सो ई क्रिटिकल आई से विच इज इक्वल टू माइनस क्यू एन ए। इफ आई जस्ट रिप्लेस दिस, सो एन डी डब्ल्यू अपॉन epsilon Na plus Nd, and we know the W, since W is equal to under root 2 epsilon by Q 1 upon Na plus 1 upon Nd, and it should be, I say this, V naught plus mod Vr.
और आई दिस वी बी आर ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसमें ये भी कह रहा है कि जो आपका वी नॉट है वो काफ़ी कम है, सिंस वी नॉट इज लेस देन योर ब्रेक डाउन वोल्टेज, सो वी हैव ए फैसिलिटी टू इग्नोर योर वी नॉट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं वी नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, काफ़ी कम दी गई है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस वी नॉट को छोड़ सकते हो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। यस, सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली। सी, आई से दिस की कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पास जो ई क्रिटिकल की वैल्यू आएगी, विच इज आई से माइनस क्यू एन ए एन डी W if I write, okay, if I just rub this, okay, so I just write like this, see, so देखिए ध्यान से माइनस क्यू एन ए एन डी अपॉन एप्सिलॉन, even W is also there, so if I just replace these values, yes, epsilon Na plus Nd. If I just put here, this is under root 2 epsilon by q 1 upon Na plus 1 upon Nd, and this is I say this V naught plus VR. If I just ignore V naught because this is very small, so देखिए ध्यान से एक बार अगर आप थोड़ी सी और कैलकुलेशन करें तो इसको आप अंदर ले जा सकते हैं। सो व्हाट हैपन, सो जैसे इसको आप अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, एंड वी ऑब्जर्व दैट 2q अपॉन एप्सिलॉन, यस, ये अंदर जाएगा तो ये Na प्लस एन डी इसमें एलसीएम हो जाएगा। दिस Na प्लस एन डी इज बेसिकली द एलसीएम, ओके, एन एन डी एलसीएम तो ऊपर Na प्लस एन डी हो जाएगा, तो ये अंदर जाएगा तो कैंसिल आउट होगा। सो होप सो वी गेट Na एन डी अपॉन Na प्लस एन डी। अगेन आई रिपीट, इसमें एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, Na एन डी, ऊपर आएगा Na प्लस एन डी, ये अंदर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर होके जाएगा, तो नीचे से Na एन डी एक बार कैंसिल, ऊपर से भी Na एन डी, तो फाइनली वी गेट दिस वन, यस, एंड हियर वी हैव वी आर। नाउ वी जस्ट रिप्लेस दिस, सो व्हाट हैपन, आई से दिस E critical and which is equal to minus q by epsilon, और इसको नीचे से डिवाइड करेंगे तो 1 upon like 1 upon Na plus 1 upon Nd. So what I observe, so this should Vi say 2q by epsilon 1 upon Na plus 1 upon Nd. So this is V, and here also this is we have a VR breakdown voltage. So देखिए आंसर इसको डिवाइड करेंगे, so 1 upon here 1 upon Nd plus 1 upon Na. So कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं, सिंस आई से दिस कि आपका जो एन ए काफ़ी कम है एन डी से, 1 अपॉन एन डी से, वन अपॉन एन ए, सो 1 अपॉन एन ए काफ़ी कम है किससे, आपके 1 अपॉन एन डी से, वी हैव ए फैसिलिटी टू इग्नोर इट, यस। इसको अगर हम छोड़ दें तो यहाँ से ई क्रिटिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो ई क्रिटिकल इज इक्वल टू आई से दिस माइनस क्यू एप्सिलॉन अंडर रूट टू क्यू I say this minus q by epsilon, yes, and here I say this minus 2 epsilon by q, and this is nd here, and this is vbr. अब देखिए ध्यान से इसमें क्या करना है, इफ आई जस्ट यू सी कि यहाँ पे q एप्सिलॉन एंड आई से दिस 2q एप्सिलॉन बाई q, ए क्रिटिकल, और ए क्रिटिकल जो इंडिपेंडेंट ऑफ nd, सो व्हाट इज द रिजल्ट, सो ये पूरा का पूरा जो है आपका, अब कहानी क्या है, ये q एप्सिलॉन, ये q 2q पर एप्सिलॉन, सारा कुछ कांस्टेंट है। सो इफ आई स्क्वायर बोथ आर साइड, तो कांस्टेंट के स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से nd into breakdown voltage is equal to I say this constant. So this is I say the answer of this question. So again I just take quick recall of this question. Yes, तो सबसे पहले ने कहा कि the field at the junction, क्योंकि आपसे कहा गया है कि at any point, so I just write at junction. Now I just relate this WP with the help of W, then I just put the W here in that manner, okay. आफ्टर दैट वी सी दिस कि यहाँ पे मेरे पास P प्लस एन की वैल्यू, P प्लस एन डायोड है, तो यहाँ पे 1 अपॉन Na काफ़ी कम होगा 1 अपॉन Nd से, तो इसमें से 1 अपॉन Na को छोड़ दिया मैंने, तो फाइनली ये आया। इसके बाद ये जो नंबर है 2q, सॉरी माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन बाई q, और ये क्रिटिकल सारा कुछ कांस्टेंट है, तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, Nd मल्टीप्लाइड विथ वॉट, योर VBR इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कहानी इस तरह से है। सो होप सो अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।